Today we will discuss about the socio-religious reform movement. The socio-religious reform movement, how it started, what it's impacted, every aspect we will discuss today in this class. So let's start without any further discussion. Yes, in the 19th century, the socio-religious movement began in India due to the following factor. So we will see how it emerged and what the factor play a role in emerge of the socio-religious reform movement. So first factor is emergence of middle class. The emergence of middle class. Second, impact of English education. Sorry for inconvenient voice. Impact of English education. Introduction of Western science and technology. That was third point. And fourth, increasing aspiration of middle class in India. As you can see, the 4 points, the four factor, as you can say, that play the role in emergence of social religious movement. Not this only roles playing the factor behind this movement, many other factors, aspects we will discuss, what they how they play roles, how did it emerge in 19th century, everywhere, what was and every. So let us start. Why did it emerge in the 19th century? The main reason why it was emerged in 19th century only, why it doesn't emerge in 18th century, why not emerge in 20th century, why it is only emerged in 19th century, what was the aspect behind this only emergence in 19th century? Let's talk about that. So there are two sets of opinion regarding the awakening of the Indians in 19th century. Now, traditional view. According to traditional view, the earlier school of historians believed with the beginning of cultural interference policy of Britisher, which started from 1830 onwards. So we can see the interference policy of Britishers started this reform. Now, next, the introduction of modern education based on European learning play a crucial role in the awakening of Indians. Example, Macaulay's Minute and Wood Dispatch, etc. So we can say the modern education of European learning, जो यूरोपियन लर्निंग की मॉडर्न एजुकेशन जो दी जा रही थी, उससे भी अवेकनिंग आई इंडियंस में, और उसी के कारण ये रिफॉर्म्स होते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं कि मिकुलस मिनट का और वुड डिस्पैच, जो दो थे एजुकेशन के फील्ड में, एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी एंड वेस्टर्न आइडियाज इन विलेज एंड रिमोट एरियाज। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अलाउ कर रखा था क्रिश्चियन को कि वो अपना आइडिया प्रपोगेट कर सके, वेस्टर्न आइडिया प्रपोट कर सके, किसमें, विलेजेस और रिमोट एरिया, जहाँ लोग को इतना अवेयरनेस नहीं है इनके बारे में, दे कैन अवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड द promotion of the scientific temperament by Europeans also played an instrumental role in the awakening of Indians. Example, Portuguese banned sati in Goa in the 17th century. The sati is banned. The whole credit goes to Raja Ram Mohan Roy. He convinced Britishers to to ban the sati from Indian culture. तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ से पता चलता है कि साइंस और साइंस का प्रमोशन, साइंटिफिक हर चीज़ का एक मतलब टेक्नोलॉजी का आविष्कार होना, साइंस का आविष्कार होना, ये भी यूरोपियंस के द्वारा एक प्लेड किया क्रूशियल रोल भारतीयों को जगाने में। जैसे कि अब क्या ये रोल प्ले किया, जैसे कि पोर्चुगीज़ बैन सती इन गोवा इन द 17th सेंचुरी। आई एम सॉरी रिगार्डिंग दैट, मैंने एक स्टेटमेंट कोट कर दिया पहले कि राजा राम मोहन रॉय ने बैन करवाई थी, वो पोर्चुगीज़ से
मुझे नहीं मालूम था, वो ब्रिटिश सर से करवाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये पोर्चुगीज़ है बैन सती, तो पोर्चुगीज़ ने बैन सती कर दी थी इन 17th सेंचुरी में ही। राजा राम मोहन रॉय से पहले भी सती उन्होंने बैन कर दी थी गोवा में 17th सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट, however the traditional view of however the traditional view of the origin of the socio-religious movement in the 19th century is not accepted now. Okay, now challenge b. What next point? B, challenge response theory. According to modern historians, the awakening of the 19th century was an expansion of social aspiration of emerging middle class. ठीक है, the next point, the middle class belongs to a group of people involved in the profession and business activities along with educational class of people. They are in between the masses and the privileged landed classes like rajas, zamindars, etc. The western impact played a role of catalyst in increasing a critical approach towards existing social and cultural practice. The Indian the Indian middle class began inter, introspecting the strength of the weakness of existing society and religious. Next, thus the Indian middle class wanted to foster the process of modernization rather westernization. You know what is the difference between modernization and westernization? We are हम जो बाहर की नीतियाँ अपनाते हैं वो वेस्टर्नाइजेशन है। हम अभी अपने फ़िलहाल के प्रेजेंट टाइम में हम अपना चुके हैं वेस्टर्नाइजेशन पूरा हद तक, बहुत हद तक। मॉडर्नाइजेशन वो होती है जो अवेयरनेस होती है, हम अवेयरनेस का नाम दे सकते हैं मॉडर्नाइजेशन को। जैसे हर न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई अगर आप डेवलपमेंट देखते हो, अगर हम उससे अवेयर हैं और हम उसको अपना लेते हैं तो वो भी एक मॉडर्नाइजेशन है हमारी कंट्री में, हमारे लिए भी है ये। ठीक है, ये फ़र्क होता है मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सोशो रिलीजियस मूवमेंट। सोशो रिलीजियस मूवमेंट रिफॉर्म्स टू आर रिमोरस इन द रिलीजियस dimension to ensure change in the social practice. It is important to note here that behind every social evil, there has been direct and indirect support and sanction of religion. Okay, उनका हस्तक्षेप था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कह सकते हैं। सोशल, अब मैं बता रहा हूँ आपको सोशल रिलीज मूवमेंट है क्या। ठीक है, नेक्स्ट, therefore every reform movement of 19th and early 20th century emphasized upon the social and religious reforms due to the two main reasons. क्यों emphasize किया? दो कारणों से किया। क्या थे दो कारण? ऑलमोस्ट एवरी सोशल कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया derived subsistence from religion, injection and sanctions. बी क्या था? नो सोशल रिफॉर्म could be undertaken unless the existing religious motions were also reforms. Hence the Indian reforms well understood the close interrelationship between different of human activities. कैसे? एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय understood the religious reforms must beside the demand for social reforms and political right for the individuals. ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही? मेरी लैंग्वेज, I have written these notes in a simple language, so I think no no such problems had to come for you. Let's start further. Next main point was social religious reform movement and Indian Russian Renaissance. Renaissance took place in Italy. First in 15th century, it refers to the Indians of revival and rebirth of the old rational and scientific belief system. Renaissance in the Europe was quite Renaissance in Europe was quite comprehensive. It impacted the religious immediately through the outbreak of the Reformation in the 10th century. Reformation was a movement to reform the religious belief system based upon medieval church and the dominance of the ecclesiastical classes. Next, in case of Indian Renaissance of 19th century, the reforms took place only in two dominants, social and religious. Next, however, like the European Renaissance, the remains Indians Renaissance also emphasized
emphasized upon the rational and scientific rational or scientific attitude, the promotions and humanism more than anything else. However, unlike the European Renaissance, Indian Renaissance remained limited to socio-religious dominance and did not enter into area of act and culture along with political reforms. There are two types of social religious reform: reformist and revivalist. Reformists believed in change in religious on the modern and scientific line. They promoted rational activity, attitude and advocated reformal of blind faith on religion. Their religious perspective was universalistic, found everywhere in world. Unistic means, for example, Raja Ram Mohan Roy considered Brahmo Samaj as the universalistic church. ब्रह्मो समाज एक ऐसा समाज था कि समाज में से सारे कुरीतियाँ हटा के हर समाज से, हर एक धर्म से एक अच्छी अच्छी बातों को संगठन करके उस एक समाज में डाल देना, जिसका नाम ब्रह्मो समाज दे देना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, वो एक इनका मूवमेंट था। द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लीड बाय आर्य समाज, रामकृष्ण मिश्र एंड दियोबंद मूवमेंट इन इस्लाम। ठीक है, ये भी रिवाइवलिस्ट था। रिवाइवलिस्ट क्या होता है? जो अभी मॉडर्न टाइम्स में हम जो रिवाइवल कर देते हैं, मतलब इन सब से अलग अलग धर्मों से हम अच्छी बात निकाल के बोल दें कि हाँ ये अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन हमने जो ऊपर पढ़ा रिफॉर्मिस्ट वो होता है जो पहले की बात, मिडाइवल टाइम सॉरी एशियन टाइम से बात लेके उसको फिर हम एम्फेसाइज करके आगे रखें कि हाँ ये बात सही है, वो होता है, इसमें फ़र्क है। ठीक है, दे बिलीव इन द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम टू गेन प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन देयर कल्चर। देखो आगे ना, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड गेन प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन देयर कल्चर। दे रिलाइड अपॉन ट्रेडिशनल लिटरेचर, री इंटरप्रेट रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस इन मॉडर्न टाइम। However, the difference between the reformist and revivalist, the disagree to which is relied the reasons and consensus, but their common objective were two. What are their common what are their common objectives? Their common objectives are reforms their religious to address two major evils. उनके दो evils उनको मेजर करते थे, दोनों को एक ही एड्रेस करना था काम। क्या था? पहला कास्टिज्म और वुमन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। These two aspects they have to address in the society as a good form of that. So this was the social religious movement started by every in the 19th century. So this आपको बात बताऊं मैं, ये चलता आ रहा था पहले भी, एशियंट प्राचीन काल से मध्यकालीन में चलता, अभी भी चल रहा है, ये चलता ही जा रहा है, ये सिर्फ बातें हो रही है इस पर, लेकिन काम कभी नहीं हो रहा। दैट इज़ अ नेम ओनली द सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।